थोड़ा डर लगता है। बच्ची के साथ फिर शेल्टर में जाना होता है, बसता है जब वो आता है रॉकेट, तो बहुत डर लगता है। इस वजह से यहाँ हम लोग सेफ हैं। भारत सरकार आपको सेफली यहाँ लेके जी जी जी। कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ आके अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब हम लोग सही टाइम पे आ गए हैं। परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है, वो क्या खुश है? हाँ जी, वो लोग से बात हो रही है, वो लोग बहुत खुश है कि हम लोग सेफली पहुँच गए इंडिया। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? हम लोग यूपी फतेहपुर के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है? स्वाति पटेल। डर लगता था वहाँ पर जब आप लोग थे वहाँ पर 7 अक्टूबर को? हाँ जी, डर तो लगता था। जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए शेल्टर में, तो उस बीच डर लगता था, क्योंकि बच्ची छोटी थी तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना है हमको शेल्टर में। हमारा इंडियन गवर्नमेंट से सेकेंड डे से ही जैसे ही हुआ कि हाँ स्टार्ट हो गया है, वो सब ग्रुप्स में वो लोग एक्टिव थे, इन कॉन्टेक्ट, सो दे वर कोऑपरेटिंग विद अस, या, एंड गिविंग ऑल इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग, and this was smooth, it was good, yeah. We live in southern part, the city is Vidrisha. It's safe, but we decided, because of him, we decided to come back to India. So how was your experience? Can you tell us in the last 3-4 days, how was your experience? Yes, on first day, actually we were sleeping, and at around 6:30, there was a siren. So, because we didn't hear in 2 years, we didn't experience that much of chaos. So we ran to shelter, and with him, it's very hard. But we managed, but I guess we live in shelter for 2 hours, because another siren. But after that, we were okay there. So how are you feeling now after coming back here? Are you relieved? Yeah, we are so relaxed, and we thanks government of India and our Prime Minister and every minister to support us to come back. Thanks to everyone. How is your family here? Was it tense when they? Yeah, they are very tense, of course, because of him, especially because of him. Because it's he's here first time, so everyone want to see him. So you're happy coming back? yeah, so happy.